Yeah, yeah. Okay. We're meeting with the family. Christmas is for family time. Some do. Some but do. For us, it's family time. Participate in many. This is called. It is artisan. It is an artisan art. Yeah, So we participate in fairs, artisan fairs. So we participate many times during the year. Sorry? Headband. Headband. Is this like you wear on your head? Okay, that's good. I'm a YouTuber, so I'm just. So that's why. Thank you so much. If you want to buy these things, so you can see the price under of the stones. There is a see 15 euro like this, and you can put at your home, at your desk where you work, office. Exactly. You know her, Thank you. No, as per my idea, that's why. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमिंद्र एक बार फिर मैं आपके समक्ष और साथियों मैं आज आया हूँ वेलेटा में हम देखते हैं कि क्रिसमस ईव की क्या तैयारी चल रही है वेलेटा में। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगा सारी इन्फॉर्मेशन जो कि वेलेटा में किस प्रकार से क्रिसमस ईव बनाया जाता है। माल्टा में सबसे अच्छा व्यू देखना है क्रिसमस की ईव के दौरान तो वो वेलेटा आपको आना पड़ेगा। और यहाँ की जो डेकोरेशन है बहुत ही कमाल की है। एक्सप्लोर करना चालू करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही जल्दी मैं आपको सारा चीज़ें यहाँ का दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या डेकोरेशन चली है और काफ़ी लोगों से कन्वर्सेशन भी करूँगा कि लोग किस प्रकार से यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या यहाँ पर चीज़ें देखने को रहेंगी वह क्रिसमस ईव पर। चलो आइए हम देखना चालू करते हैं और क्या क्या साथी। ये तो हम आपका स्क्वायर है ये कि वेलेटा के अंदर जाते हैं। देखो काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर अब स्टॉल लग गई हैं तो यहाँ पर काफ़ी आपको हैंडीक्राफ्ट चीज़ भी मिल जाएंगी और मच मोर थिंग्स दैट आपको जो लगेगा कि हाँ बाकी हमें आना चाहिए। सो लेट गेट स्टार्ट टू एक्सप्लोर हर वेलेटा कि क्या कुछ है ख़ास वेलेटा में देखने के लिए। हेलो मैम, हाउ इज स्पेशल? व्हाट इज द स्पेशल इन क्रिसमस ईव? What I'm doing special. Yeah. Okay. We're meeting with the family. Christmas is for family time. Some do. Some but do. For us, it's family time. We meet with a whole family and we spend Christmas Eve together. I think that's a good idea. To us, Christmas time, all yeah. Christmas is Even spice shops. Yeah, it's there. You found them? Yeah, I Okay, found. but there's one in Cedar Yeah, and one in the... Yes, ma'am, please attend to the guest. Thank you, sir. Hello, how are you? So देख सकते हैं यहाँ के जैसे कि इंडिया में आपको वुडन की चीज़ें मिल जाएंगी तो यहाँ पर भी इज़ लाइक ये इस प्रकार की आपको वुडन की चीज़ें हैं वो आपको वेलेटा में यहाँ पर आपको देखने को मिली। दिस इज़ अ मैम, सॉरी टू बोदर यू, I just want to ask you, is this first time you are set up this stall or usually used to do? No, we set it up even last year. No, we participate in many. This is called. It is artisan. It is an artisan art. Yeah. So we participate in fairs, artisan fairs. So we participate many times during the year because we are part of the foundation. Similar. These are all recycled items. Yeah, Recycled wood. I'm from India. Yes. Yeah, I'm from India. Hi, sir. This is my husband. He is the person who produces these things. Oh, really, sir? How many years have you been with such kind of toys? Since I was 20 years old. 20 years old? Since I was 20. Oh, since you was 20? So I'm over 45 years. 45 years. It is incredible. I think people, small toys, children, very addicted to play with such kind of things, right? So I'm a blogger, I'm a YouTuber actually on Christmas Eve. So people can come here and can buy the things what If you you are. want to film, you can film free. But I can assure you that on Christmas Eve, Yeah. people will not come to buy, people will come to drink. I'm a teetotaler, so I don't do drinks anything. I just want to explore. But it's a happen. Sometimes you used to come for just
But buy. if people want to buy, they can come and buy. Yes. But if you want to film something, you can. Yeah. This is like for the marketing or the things. Okay. Okay. Sorry to interrupt you. Please keep going on. Thank you. Thank you. Ma'am, how are you, ma'am? So you are selling for the ladies' products? Yeah, that's great decorations. But even I think that's very quite traditional in Malta. Such kind of attire. But more, such kind of attire. Ah, okay. Yes. So, but in India, you will not see lehenga, chunni, saris. These are Indian attire. Sorry? Headband. Headband. This is like you wear on your head. Okay, that's good. I'm a YouTuber, so I'm just. So that's why. Thank you so much. Please enjoy. Keep going on. Bye. तो आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर जैसे लेडीज़ की ज्वेलरीज में क्या क्या मिल सकता है, तो वो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। I basically have my workshop, which is my Just for Christmas time, I do once a year. Once in a year, just only Christmas time you do. And full time what you do? So what's the name of this place? Valletta. Valletta. The Fairyland. Fairylands. Christmas Fairylands, and there are multiple shops are here with the different decorations and different articles and objects. So you can come from the direct the lane and you will find a lots of things. There is some stones. They created some beautiful picture on the stones by herself. So basically her have a like a part-time hobbies, or you can say passion. But I totally astonished watching such kind of things that are what I'm seeing here. If you want to buy these things, so you can see the price under of the stones. There is a see 15 euro like this, and you can put at your home, at your desk where you work, office, or at a home. Am I right? Yes, perfect. Exactly. You know it right. Thank you. No, as per my idea, that's why I show you. By the way, I'm a YouTuber and I'm just blogging about the Malta, so I can explore as much as I can. So I can upload the video for my viewers, so they can get it, they can come here and get whatever they want. I want to encourage them. Okay, thank you very much, and please ciao. Thank you. So guys, you can see the things are here, more good. अब आइए हम वेलेटा का जो मेन डेकोरेशन है वहाँ पर अडल्ट मज़े करते हैं, और क्या है वहाँ की हकीकत, नाइट लाइफ जो क्रिसमस में होने वाला है, और क्या डेकोरेशन, क्या प्रोफेशन चल रहा है माल्टा में, वो हम अब एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलो आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। सी म्यूज़िक बहुत शानदार चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये बहुत ही कमाल का है जो व्यूज़ है यहाँ पर, लोग एंजॉय कर रहे हैं जैसे लाइक इंडिया में होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही काफ़ी बड़ा है, तो देखिए आप। और यहाँ पर पिक्चर शूट के लिए एक स्क्रीन लगा दी गई है, सो यू कैन कम एंड टेक ए ब्यूटीफुल पिक्चर ओवर हियर। सो सी मैनी पीपल्स विल टेकिंग द पिक्चर। नाइस नाइस नाइस। ये तो शानदार है यहाँ का, बहुत ही गजब का है, जो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। देखिए साथ ही ये भी सारी स्टॉल है यहाँ पर, फूड स्टॉल हैं, और इसके अराउंड में हम चलते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या डेकोरेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर समथिंग न्यू।
want to know in a Valletta, Christmas Eve, mostly adult people, what they do here? Christmas Eve, what do they do here? Adult, what do you like the most in Christmas Eve? Usually over here there's a lot of restaurants, bars, everything. So they come for dinner, family, friends. But not too much drama. Drama? Don't drink and like this thing doesn't. No, they definitely drink. Because I'm fear of the fighting. The people some kind no, of. nothing like that. Nothing like that. Friendly. Oh, that's why I want to know if I come to enjoy in Christmas Eve. I think it's just right. It is. It's super good. Yeah, wife. Oh, that's good. You come with girlfriend or along? Yeah, come with my girlfriend. Yes. Ah, you have a nice girlfriend, right? But I'm no sir. Chalo, keep going on. Enjoy. Bye. Thank you. तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर ये काफ़ी शानदार बच्चों के लिए झूला है। तो यहाँ से बच्चों के लिए यहाँ पर मोस्टली आपको बड़े लोग दिख रहे हैं जो कि काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं इस चीज़ का। So, ma'am, what is the price of this one? €3. Only adult or children cannot? Both can enjoy. Thank you. So, €3 का प्राइस है और यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली टॉस एंड द Hi, excuse me, ma'am. What's all about the game? You have to throw loops in here, and you have 3 tries. 3 drives. Yes. So, what is the price? So if you put in 3 into this one, you get a medium one. If you put 3 into the white one, Okay. you get a large one. And if you have mixed, you get a small one. Small one, this toys. What? Yes, these are the small ones. That's great. So, the price for the play of what is the cost of playing this game? It's €3. You have to buy a ticket from there. So guys, the price of €3, just like इंडिया में एक जैसे कुछ सामान रख देते हैं मेले में ना, उसके ऊपर आपको डालना है और कुछ चीज़ मिल जाती है तो आपको वो प्राइस मिल जाती है। तो इस प्रकार के फिर आपको यहाँ पर ये टॉय मिलेंगे, मीडियम, लार्ज, ऐसे छोटे छोटे करके। तो वो डिपेंड करता है आपको किस तरीक़ा से खेलते हैं और क्या आप प्राइस के हकदार हैं, उसके हिसाब से आपको मिल जाती है। लेट्स सी, देखिए यहाँ पर आप देखिए इतना ज़बरदस्त डेकोरेशन, ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी शानदार। वेरी ब्यूटीफुल। तो वेलेटा का मेन चौक है, मेन स्क्वायर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको खूबसूरत सी तरह मिल जाएंगी। बहुत ही कमाल का नज़ारा है, लोग आ रहे हैं और लाइफ तो बहुत ही शानदार है।